Hello, I welcome you all to my channel, and this is a good time for us to learn a new chapter from prose. So this is the story named My Greatest Olympic Prize. So by the name of the story you can imagine that my greatest Olympic prize means it the story describes or tells about a person, because my greatest, it is about someone has wrote the story, Jesse Owens. The story describes about Jesse Owens, and he has only written his own story, what was his greatest Olympic prize and how he got it. So it is autobiographic story written by Jesse Owens about himself only. So let us see. Okay, so let us begin. First, before going into this, you have to remember two things. Jesse Owens belongs to Negro, and Lodge Long was and Hitler were Aryans. That we will see at the last. It was the summer of 1936. Summer, गर्मी का मौसम था. Which year? 1936. The Olympic Games were being held in Berlin. What is this Berlin? Capital of Germany. What is Berlin? Capital of Germany. तो समर के समय 1936 में क्या हो रहा था? Which event was being held? It will ask in exam. Olympic Games were being held in where place name Berlin in Germany, because Hitler childishly insisted that his performers were members of mass. हिटलर एक था, ठीक है. हिटलर ही वॉज बिलीविंग दैट हिज रेस एंड मीन्स हिटलर क्या था? आर्यंस वेयर द सुपीरियर, मतलब कि इससे बड़ा ओलंपिक में कोई नहीं था. ही वॉज द विनर. ही शोज टू द वर्ल्ड दैट हिज the Aryans are superior than other all countries or nations. childishly का मतलब क्या होता है? immature. Hitler childishly immature, what we can say, nature insisted that his performance is not there. Uska performance he kept every performance in each and every field. For long jump, for high jump, for every event he has a different performance, and they were member of a master race. What was the name of this group? Master race was a group which every performance were member of this master race, which was managed by Hitler. Okay, nationalistic feelings were at an all time high. कि अपने देश के प्रति नेशनल फीलिंग. So why it was high all the time? Because Hitler shows that his performance were best, superior. So that time every nation were trying, I will show this time that my country is best, I will show this time that my nation is superior. So that time the nationalistic feelings were high for all nations. Okay, next. Here I refers to Jesse Owens. His story only we are learning. I was not too worried. Okay, Jesse Owens was not too worried. Why? About all this. I had trained. He has trained himself. Sweated मतलब पसीना बनाया. Did hard work. पसीना बहाया. ठीक है, sweated. And disciplined myself for 6 years. Discipline मतलब ना, he has a habit, properly maintained his order, or you can say schedule for preparing for the event. For how many years? Totally 6 years. So if it in exam it come, why Jesse Owens was not worried? Because he has trained himself, sweated and disciplined for how many years? 6 years, with the games in mind. क्या दिमाग में था? Games. Why he has trained, for what he has sweated, for what he has disciplined 6 years? For game in his mind. Which was, what is in his mind behind all these trainings? Game. Okay, which game? Olympic Games. While I was going over on the boat, okay, while he was going on the boat, all I could think about, क्या सोच रहा था जब बोट से जा रहा था, was taking home one or
two of those gold medals, एक नहीं तो दो, at least one gold medal ले जाने के लिए, जीतने के लिए. Who was thinking? Jesse Owens was thinking while he was over the boat that at least one or two of those gold medals I should take home, means I should win these gold medals. I had my eye, अब देखो मेरा आँख, नज़र बोलते हैं ना, नज़र किस पे था, स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप, on which game or on which event was Jesse Owens' eye, especially on running broad jump. Running broad jump मतलब long jump, not high jump, long jump, broad jump, running broad jump. A year before, how he has confident that and how he has expectation to win in the running broad jump, because क्योंकि एक साल पहले, a year before, as a sophomore means ना second year student, for you will go for BTech engineering or anything, you will have 4 years, right? So second year of his college, at which university he was learning, remember the name, Ohio State University में second year में I had set the world record of 26 feet 8 1/4 inches. क्यों उसको विश्वास था? Why he was confident in winning gold medal in running broad jump? Because the previous year in the second year of his Ohio State University, he had set the world record for how many feet? 26 feet 8 1/4 inches in broad jump. Okay, everyone kind of expected me, सब लोग उससे क्या आशा या उम्मीद लगा के रखे थे कि टू विन दैट ओलंपिक इवेंट हैंड्स डाउन, वो ओलंपिक इवेंट हैंड्स डाउन मतलब वेरी इजली, आसानी से जाए, कूद गया, वाह, हो गया, कंप्लीट, यस कंप्लीटेड, जीत गया, बस. दैट वाज ओनली हिज एक्सपेक्टेशन. एवरीवन एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम दैट he should win the Olympic event. Which event? It will ask him. Running broad jump, hands down, very easily, आसानी से जाओ, कूद जाओ, लेकर आ. Okay, next. I was in for a surprise. I here refers to whom? Jesse Owens only. I was in for a surprise. क्या surprise मिला था? When the time came for the broad jump trial, ऐसा था. See, for the Olympic games के लिए बहुत सारे देश from many countries, many as एथलेटिक्स गेम्स, राइट? तो सबको अगर लिया जाएगा द ओलंपिक गेम्स में तो मज़ा नहीं आएगा. इफ़ देयर आर 100 countries, 100 people केम फॉर रनिंग ब्रॉड जंप, 100 each from one their nations. Okay, one athlete from this nation, every country one people came, so 100 people will be there in the final of Olympic games in running broad jump. मज़ा आएगा? नहीं, it will be boring, not interesting. The competition will be very boring and long. So for that only, before the day of Olympic event, they have a trial क्या के लिए? To qualify for eligible to be in Olympic games final के लिए. So they will set a point that you have to cross 24 feet, 20 feet, 23 feet, so you will be qualified to be in the Olympic games. That was okay, trial. So when the time came for the broad jump trials of whom? Jesse Owens, I was startled, means surprised to see a tall boy. Okay, he was surprised to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice lane. अरे वो तो प्रैक्टिस में ही ना, just simply he jumped, one tall boy jumped simply and he hit the pit of how much? Almost 26 feet. सी डिस्टेंस देखो, वो कितना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जेसी ओवेंस, 26 फीट 8 1/4 इंचेस. बट यहाँ पे क्या हुआ ना, 26 फीट एक लड़का जो लंबा टॉल बॉय आसानी से प्रैक्टिस में जंप कर गया. प्रैक्टिस सेशन में डायरेक्टली ऐसे ही मतलब नॉर्मली ही जंप्ड एंड ही वाज ऑलमोस्ट 26 फीट. सो ही हैड टेंशन, कंपटीशन इज लिटिल हार्ड. ही टर्न्ड आउट टू बी ए जर्मन हु ही जिसको देखा था वो टर्न्ड आउट टू बी ए जर्मन था नेम्ड लज लॉन्ग. What was the name of the tall boy with Jesse Owens sit during his practice trial? German boy Ludge Long. Okay.
Okay, I was told that Hitler had kept him. ओहो, इसको बताया गया, क्या बताया गया ना कि हिटलर, वी हैव लर्न फर्स्ट ओनली ना, हिटलर हैज मेड द मास्टर रेस ग्रुप, हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप, अंडर रैप मतलब बोरा में बांध कर नहीं, बॉडी में बांध कर प्लास्टिक में, ही हैज नॉट क्लोज्ड इन अ प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग, ही हैज रैप्ड मीन्स ही हैज केप्ट हिम सीक्रेटली, रिवील नहीं किया कि हाँ हमारे पास भी एक ब्रॉड जंपर है जो 26 फीट से भी ज़्यादा जंप कर सकता है, सो ही हैड केप्ट हिम सीक्रेटली, बाहर रिवील नहीं किया था किसके बारे में, लज लॉन्ग के बारे में, कौन, हिटलर। ओके, एविडेंटली होपिंग टू विन द जंप विथ हिम, एविडेंटली होपिंग टू विन द जंप विथ हिम का मतलब क्या होता है, कौन होप कर रहा था, हिटलर, टू विन द जंप विथ हिम, किसके साथ, लज लॉन्ग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, आई गेस्ड दैट, आई फिर फर्स्ट जेसी ओवेन, आई गेस्ट मैंने सोचा, अनुमान लगाया, क्या, जेसी ओवेंस अनुमान लगाया कि इफ लज लॉन्ग ओन, अगर लज लॉन्ग जीत गया, ठीक है, सोच रहा है, देखो इसके मन में डर आ गया, ही गॉट फियर दैट इफ लज लॉन्ग विन it will add some new support to the Nazis Aryan superiority theory. नजीस बोले थे ना स्टार्टिंग में, आर्यंस बिलोंग करता है, नजीस आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी में क्या था कि दोस हु आर द पार्ट ऑफ दैट दे बिलीव्ड दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स ना, उन लोग का थ्योरी यही था कि दूसरा कोई भी नहीं है उन लोग के सामने, दे वर एट द टॉप ऑफ, तो ये अगर जीत जाएगा लज लॉन्ग ब्रॉड जंप में तो इट विल एड सपोर्ट, उन लोग को एक क्या मिल जाएगा, हौसला, कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, ठीक है। आफ्टर ऑल आई एम निग्रो, आई एम निग्रो, आई एम कौन, जेसी ओवेन से जो निग्रो, निग्रो मतलब अफ्रीकन्स, वो लोग आर्यंस था, इन लोग कौन है, ये कौन है, अफ्रीकन। ए लिटिल हॉट अंडर द कॉलर, ए लिटिल हॉट अंडर द कॉलर का मतलब क्या होगा, गर्मी ना, एंग्री, और थोड़ा तुरंत बोलो गुस्सा हो जाएगा ना, एंग्री अबाउट हिटलर वेस, किसका, अरे हिटलर के तरीक़ा से कौन गुस्सा रहता था, जेसी ओवेंस वाज एंग्री अबाउट होम, हिटलर वेस। ओके, आई डिटरमाइन टू गो आउट देयर एंड रियली सो, ए डिटरमाइन टू गो आउट मतलब क्या, वहाँ ट्रायल छोड़ के बाहर जा रहा था, नहीं ट्रायल में जाने के लिए, एंड उस ओलंपिक एंड देयर एंड रियली सो डर फहरर, डर फहरर मतलब लीडर, कौन था लीडर, हिटलर, हिटलर को दिखाएगा दैट हिज मास्टर रेस, हिज मास्टर रेस मीन्स हिटलर्स मास्टर रेस हुआ सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, तो ही डिटरमाइंड, जेसी ओवेंस डिटरमाइंड, फैसला निर्णय लिया कि आई विल गो एंड शो द हिटलर that his master race were superior or not, he was superior or I am superior, I will show. Who has determined this, who, hey, don't forget it, Jesse Owens, remember the name, spelling, Jesse Owens, Jesse Owens, and this one Luz Long, one more, you remember these two names, okay. Next, an angry athlete is an athlete who will make mistake, oh गुस्सा करेगा, oh you will be, if you will be angry then you will what do, you will do mistakes, an angry athlete is an athlete who will make mistakes, right, as any coach will tell you, कोई भी कोच आपको क्या बताएगा ना कि अगर आप गुस्सा करोगे, गलती करोगे, अरे हम जा रहे हैं और जीतेंगे जीतेंगे, दौड़ रहा दौड़, यू विल मेक अ फाउल ना, इफ सो यू हैव टू बी, इफ यू आर ए गुड, इफ यू आर ए प्रॉपर डिसिप्लिन्ड एथलीट, देन यू शुड नॉट बी एंग्री, यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू बी काम, पीस, राइट, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस। आई वॉज नो एक्सेप्शन, मैं बोल रहा कि कोई भी कोच आपको बोलेगा कि इफ़ यू विल बी एंग्री यू विल मेक मिस्टेक, तो उसमें मेरा एक्सेप्शन नहीं था, मतलब कि आई वॉज ऑल्सो इन दैट ग्रुप हु मेक मिस्टेक्स ड्यू टू एंगर, समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा है, एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स, ठीक है, वो गलती करेगा, एज एनी कोच विल टेल यू, कोई भी कोच बोलेगा, उसमें आई वॉज नॉट द एक्सेप्शन, अगर बोलता है कि आई वॉज द एक्सेप्शन मतलब कि आई एम नॉट एंग्री and I do not make mistakes, but at first only he saw that he is hot under the collar, we have seen the word hot under the collar, मतलब कि ये भी बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सिला, बहुत एंग्री, ओके, वेरी एंग्री,
person. Who? Jesse Owens. I was no exception. On the first of my three qualifying jumps, so there will be three attempts to qualify for the Olympic Games. So on his three qualifying jumps, I leaped from several inches, कुछ inches से पीछे से jump करना शुरू किया, beyond the take off board and for a foul. Beyond the take off board मतलब take off board के बाहर चला. So there will be a line. Suppose that here is Jesse Owens. चलो मान लेते हैं दिस इज जेसी ओवेंस. यहाँ पे है जंप करने का लाइन पॉइंट सेंटर. फ्रॉम हियर यू टू जंप. सो इफ यू विल क्रॉस दिस एंड जंप फ्रॉम हियर, इस पॉइंट से अगर ये लाइन पार हो गया तो इट विल बी मेड एज ए फाउल. फाउल का मतलब समझ में आता है? फॉल. फॉल जब बोलते हैं ना फॉल, फाउल हो जाएगा. सो ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेड फाउल. ओके. ऑन द सेकेंड जंप आई फाउल्ड इवन वर्स. अरे मान लो अगर पहला बार यहाँ से जंप किया था तो सेकेंड बार यहाँ से, पहला बार यहाँ एक, दूसरा बार यहाँ, उससे भी आगे से, बहुत आगे से, मतलब बहुत गंदा फाउल हो गया सेकेंड टाइम. पहला बार तो फाउल हुआ, सेकेंड टाइम वर्स फाउल. डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस? सोच रहा है अरे हम 3000 माइल्स दौड़ से आए हैं, तीन बार का क्वालिफाइंग जब मैं 2 बार फॉल करने के लिए. I thought bitterly, angrily, okay, to foul out of the trials and make a fool of myself. तो मतलब कि फाउल करने के लिए और खुद अपने आप को मूर्ख साबित करने के लिए, that I am mad, full of myself. So that was from the part 1 of this story.